हाँ बोलो कि ना बोलो कि फर्क नहीं पड़ता, मैं तो स्टार्ट ही कर देने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउस लाइफ, हाउस लाइफ अच्छा है, बढ़िया है। ऑनलाइन एम आई ऑडिबल, इज द स्क्रीन विजिबल? बढ़िया, चलो। जीके करंट अफेयर्स, कल ही कोई सेशन में बोल रहा था कि नॉर्मली मैं जीके लेता नहीं हूँ एंड आज किस्मत वुड हैव इट, आज मैंने ठान लिया आज मैं जीके लेके रहूंगा, टॉर्चर, एंड आई विल मेक यू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड सी हाउ मच यू नो. This is going to be a very very simple static current affairs oriented GK session, but it is going to be a real test of how much you have actually known something, how much you are living in the current times. So we'll start with some very simple questions. Let's see how many of these you can answer. तैयार? क्रॉस योर फिंगर्स. हाँ बोल बोल, पूछ ले. मैंने ऐसे किया, तूने भी ऐसा किया. क्रॉसिंग फिंगर्स. हाँ, टच वुड, बहुत सारा वुड है चेयर पे, टच कर लो. 75 questions roughly. How many you think you know out of these? Not 75, more than 100 actually. हाँ, वो क्या कॉन्फिडेंस है. 100 क्वेश्चन, 75 to 100 क्वेश्चन में से 1 or 2 पता होएगा. अब चलो पहला क्वेश्चन पूछता हूँ. पहले क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं आया उसको तो पता नहीं, लात मार के बाहर निकालना पड़ेगा. हैं? कितनों को लगता है फर्स्ट क्वेश्चन they'll be able to answer? इसका आंसर अगर किसी को नहीं आता तो इसलिए मैंने तो धीरे धीरे करते ना, वैसे जैसे बॉलिंग में भी फर्स्ट बॉल में बाउंसर मारेंगे तो बेचारा डर जाएगा. सो वो ट्रायल बॉल, घर में नहीं खेल रहे, ट्रायल बॉल. सो टेल मी, एंड नोबडी हैज गिवन मी द आंसर ना अभी तक. सब पता है, सब हंस रहे, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया है. चाचा है था आपका नरेंद्र मोदी. हाँ तो आगे कुछ टाइटल लगाओ ना ऐसा. चचे को भी अब जी करके बोल, नरेंद्र मोदी जी बोला होता तो भी ठीक है. नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी बोले तो अच्छा लगता है. यूजलेस जनता. चलो, श्रीमती द्रौपदी, श्री नहीं लगता है, फीमेल के आगे श्री नहीं लगता है, फीमेल के आगे श्रीमती लगता है. So who is the current president of India? And who was the first female president of India? उससे पहले तो I should have asked who was the first prime minister of India? वो भी 100% का जवाब नहीं, कुछ कुछ बोल रहे, कुछ कुछ सोच रहे. कौन था? कोई तो महात्मा गांधी थे क्या? The first prime minister of India was Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru. And the first president of India was, the first president was, first female president was Indira Gandhi. Was the first female prime minister of India, and it was just 2 presidents before the current one. So anything we talk about, you have to know the current one, but you also should know the first one of that category. So the first female president was Srimati Pratibha Patil, and the current one is of course Srimati Draupadi Murmu. Okay, चलो पहले तो ट्रायल बॉल्स खत्म, अब चालू करते हैं. ये भी पता होगा, ये तो पता होना चाहिए. And this was in the news just last couple of weeks. The Vice President of India was currently in the news for some stupid reasons. Does anybody know why the current Vice President of India was in the news recently? अबे न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन में सारे इवनिंग चैनल में चिल्ला चिल्ला के ये डिस्कशन चल रहा था. The Vice President of India was in the news for some very awkward reasons in the past 10-12 days. Not something he did, but something was done. क्या? That's not a stupid reason. I mean, whatever your political leanings, but that reason is not necessarily stupid. Online पता है, जय को पता है. Fantastics. Very good.
अगर मेरे को जवाब नहीं आया और किसी और को जवाब आया नहीं, सामने वाले ने तो चीटिंग ही की है। वेरी गुड। हाँ बोलो। डू यू नो लोकसभा सेशंस चल रहे थे एंड उसमें लॉट ऑफ मेंबर्स वेर आउट। सो हाँ, तो क्या हुआ उसके आगे फिर? हाँ तो हाउ वाज द वाइस प्रेसिडेंट इन्वॉल्वड इन दैट? So when these members were ousted, they came out and they made mockery of him. And one of the opposition party top leader was making a video of it, and पूरे शाम को न्यूज चैनल्स पे चल रहा था, वाइस प्रेसिडेंट की गरिमा पे चोट पहुंची, ऐसे कैसे, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन द वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ केम एंड मेड कि मेरी जाति पे करो, मुझ पे करो, लेकिन पोस्ट के ऊपर मत करो। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट। That brings us back to the question, who is the current vice president of India? Shri Jagdeep Dhankar. Who's the current cabinet minister for the Ministry of Defense? I've given up hopes of you adding titles in front of the names. Shri Rajnath Singh. Okay, Ministry of Home Affairs. इसमें तो गलती से भी श्री अगर गिरा दिया तो पंगे के चांस लगते हैं। So, cabinet minister for Ministry of Home Affairs. Finance. So, श्रीमती निर्मला सीतारामन। ये पता होना चाहिए। लॉ एंड जस्टिस। एक बार किया हुआ ये सेक्शन। वेरी गुड। और फिर भी नहीं पता। बंद कर बुक को तो बंद क्या, तो ब्लैंक पेज सामने रख। हैं? अभी लिटरली वो बोल चुकी है ना यार। ध्यान नहीं तो कम से कम कान तो खुले रख, कोई ना कोई आंसर फोड़ रहा है पीछे। एंड मोबाइल फोन से प्रीवियस नोट्स बंद चाहिए सबके। अब बुक चाहिए होगा उसको अभी। सो द करंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल। चलो अगला वाला तो इज अ वेरी वेरी फेमस पर्सन इन न्यूज, एक्सटर्नल अफेयर्स। That guy. So the cabinet minister for Ministry of External Affairs is Dr. Subramaniam Jaishankar, S. Jaishankar. Who's the current cabinet minister for Ministry of Education? तुम तो स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा मिनिस्ट्री का ही है। जो भी अच्छा जॉब नहीं करता। वाह, तेरी सर्टिफिकेट की कमी थी। व्हाट डू मीन बाय अच्छे जॉब नहीं कर रहा है? तो प्रेशर दो। अबे इतना तो सस्ता कर दिया है तुम्हारा एजुकेशन। कोई सस्ता इन द सेंस पास होने के कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी पढ़ाई करो भर। अबे लैंग्वेजेस में तुमको 100% मिलते हैं एग्जाम में, और कितना तुमको चाहिए इजी एजुकेशन? who is the current minister for Ministry of Education? Patigyu. The end. Huh? So current cabinet minister for Ministry of Education is Shri Dharmendra Pradhan. अगर नहीं पता हो तो लिख लो। And the good or bad thing about is this, these things keep changing. By the time your exams comes, it could have changed. So you'll have to keep updating the information of these things with you. Like happened with me, आज सुबह बैठ के पूरा मैं रिवाइज कर रहा था, सब सही है ना, कितने चेंजेस हुए नाम में, पूरा पीपीटी, आई मीन 90% ऑफ द पीपीटी चेंज करना पड़ा मुझे आज। Okay, so education is Shri Dharmendra Pradhan. Science and technology. हैं? देख के तो बता देंगे, बिना देखे हैं? तू पेज को पलट, So current cabinet minister for science and technology is Dr. Jitendra Singh. Okay, information and broadcasting. ये तो भूल, spit it out. इसके लिए तो हर कोई दैट गाई है। You're not wrong. He's also related a lot with sports. Yep.
Huh? So the current cabinet minister for information and broadcasting is Shri Anurag Singh Thakur. Anurag Singh Thakur. Okay. Current cabinet minister for railways. वो highways and roads के लिए जोर से बोलना और लास्ट नेम क्या था इट्स अश्विनी वैष्णव श्री अश्विनी वैष्णव इज द current cabinet minister for railways okay minority affairs very common in the sense very famous Jay no ये तो पता होगा at least ये person पता होगा you may not know that the person is holding this post this person is definitely very well known नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी you know the connection with सास बहू right serious have you heard of क्योंकि सास भी बहू बहुत ही serial she was one of the lead actresses in सास बहू अच्छा ही नहीं देखा है अच्छा ही नहीं देखा आजकल तुम्हारे घर में उसकी जगह पे एक आध सीरियल वो चल अनुपमा चल रहा होगा दिस इज दी ओजी ऑफ अनुपमा टाइप सीरियल्स मैंने भी लाइफ में कभी नहीं देखे नाक में बहुत दम करता है thankfully I was away in school and college when all this used to happen okay so minority affairs Priti Zubin Irani okay now comes the interesting thing I'll give you some time I want you to list down the states and union territories of India, which means you know how many of them are, and note them in a single line because उसके सामने बहुत सारा information लिखेंगे अपने. So first of all, you need to list down how many states and you. So first of all, tell me how many states are there in India. So if you think there are 28 states, make a list 1 to 28 and fill the blanks. Let's see how many of them you can remember. States and union territories of India. अगर तो मैप देके रिकॉग्नाइज कर सकता है तो अल्टीमेट है फॉर मी द इजीएस्ट वे इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर yes sir please what did you say can is ability please permission unit carpet investment petroleum I love this particular Excel because I get to see creation of new states of India.
And Pondicherry कुछ भी नहीं है. कुछ भी? There is no place called Pondicherry right now in India. It's called Puducherry. No. जो लिखना हो लिख, जिसमें लिखना हो लिख, अगर लिख सकते हो. Creation of new states. हुआ हो गया इसका? हाँ? बिल्कुल आता हूँ. मेरे पता चला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए कि नहीं मुझे नहीं देता है. हाँ. क्या चीज? हाँ जी. Mostly non-Christian states people would miss. कौन से दो? तीन इसके अलग. वो मिस कर दिया. वो मिस कर दिया. मैं भी लग गया. So going to Goa is the most important. फैमिली ट्रिप बनता है. फैमिली को मीट करना है. बिफोर न्यू ईयर आई वाज बैक इन. तो क्या वही क्या कोई फायदा नहीं. चलो देखें. नहीं ये तो सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज लेफ्ट. सर हां whatever you have listed down अब उसके सामने उसका कैपिटल क्या ज्योग्राफिकली दमन के साथ और चार नहीं. Now four of them are combined. People who don't live in Gujarat or are not aware of geography think Daman means Baju. Whereas they are very far off. Even if I just feel it's far off. But then you start to start
And UPs में it's very easy to miss out the non-mainland parts of India. वो कल यूज में जा रहा था. How Tiruvananthapuram. Tiru means Shri. अभी capital क्या था? और just write down the original name. Trivandrum. जैसा बोलता वैसे ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है. और तो बाकी का करेक्ट वो ऐसे पे वो नहीं करें कैपिटल और उसके बाद चीफ मिनिस्टर मैंने बोला लाइन में और उसके बाद उनकी कैपिटल सिटीज और उसके बाद उनके चीफ मिनिस्टर्स और अभी तो शुरुआत है. स्टेट है. नेक्स्ट टाइम पेट्रियोटिक कोई भी पोस्ट डालो ना उससे पहले उसका पेज देख लो. इंडिया में अगर स्टेट्स नाम नहीं फॉरगेट कैपिटल एंड सीएम एंड फिर हम पेट्रियोटिक पोस्ट 26 जनवरी आएगा पेट्रियोटिक पोस्ट डालो उसके पहले मेक श्योर यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज. किसी पॉलिटिशियन को पूछना चाहिए क्या पॉलिटिशियन मेरा गांव है गोवा. गोवा 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 कैसे बाजू में आता है. चलो ओ जनता. ओके हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल 28. बोल 29 कौन सा है. मणिपुर इज अ स्टेट. इज अ स्टेट. तो फिर कुछ रिपीट तो नहीं हुआ है. चलो मैं लिस्ट बताता हूं उसमें से देख लेना. ओके हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 20 प्लस 20 एंड अबव. लेस देन 20. हाउ मेनी लेस देन 20. 19 है. एक आध जो नाम ले रहे थे उसमें से चेप दे 20 तो पहुंच जाएंगे. चलो now let us see how many actually online. Maybe I'm getting responses from only one. I'm assuming that the other are still writing it. Okay, so states of India, we'll start in alphabetical order, right? Down south, Andhra Pradesh. And Andhra Pradesh has the distinction of being the first state created on the basis of language. It was the first state of India which was divided on the basis of language. And Andhra was also split few years back. Telangana Andhra Pradesh का part था. Telangana became the new state. Okay. Andhra Pradesh के बाद East Arunachal Pradesh. So there are two APs. So if you write AP, I'm not sure which AP you're talking about. Both Andhra Pradesh and Arunachal Pradesh are AP. Then Assam. Why is Assam called Assam? Huh? Assam is called Assam, but why is Assam called Assam? What is the? The names of a lot of places have a lot of history behind them. So Assam is named after the Ahom tribe which lives there. So Ahom tribe used to live there. Still lives there. It's named after this tribe. You have the state of Assam. Then Bihar.
famous for a lot of universities in the past, even currently famous for a lot of people who crack the administrative services, UPSC and other national level administrative exams. Bihar ki janta. If you meet Bihari people, they will be fanatic for education like languages and mathematics. Pagal honge. Then Chhattisgarh. Chhattisgarh was created a lot of years after independence. In fact, late 90s or early 2000s में ही Chhattisgarh was created. गोवा, कोई गोवा भूल गया था. गोवा used to be a union territory, but तुम्हारे पैदा होने से पहले स्टेट बन चुका है वो. Although the size of Goa may not be even as large as our city, but it is still a state. ये अगर कोई भूल गया है तो पड़ेगी गुजरात. बट होता है कभी कभी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि गुजरात भूल जाते हैं. देन हरियाणा. लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल कम फ्रॉम दिस रीजन. हरियाणा. हिमाचल प्रदेश. माउंटेन्स, घूमने फिरने जाने का मस्त. हाँ हिमाचल, but it's a big state. Okay. Jharkhand. Again, Chhattisgarh, Jharkhand, these were created at the same time. Very famous for forests, mines, and of course Dhoni. Karnataka, IT capital. Then you have Kerala. What is Kerala also known as? What is the title given to Kerala? God's own country. And one of the only two places in India where still Communist Party has a major hold in politics. One is Kerala. What is the other state? Where the Communist Party is very active. Huh? West Bengal. Okay, Madhya Pradesh, Hindustan ka dil. It's literally in the center of India, so Madhya Pradesh. Maharashtra, finance capital of India is in this state. Entertainment capital, finance capital, major. Then northeast, Manipur. Meghalaya. Why is Meghalaya called Meghalaya? Megh means cloud and Alaya means home. So Meghalaya is literally the home of the clouds. The rainiest places in the world are in Meghalaya. Cherrapunji and Monsoonram. Huh? So some say it is Monsoonram, some say it is Cherrapunji. दोनों गांव बाजू बाजू में ही है. So Cherrapunji and Monsoon, the rainiest places, the wettest places on the earth are in Meghalaya. Then Mizoram. मिजोरम के बाद नागालैंड. नागालैंड के बाद उड़ीसा. उड़ीसा के बाद पंजाब. Why is Punjab called Punjab? Because of 5 rivers. So Panj means 5, Ab means river. So Punjab, the land of the 5 rivers. It's Punjab. Rajasthan, Rajaon ka sthan, the land of the royals. Sikkim, northeast. Tamil Nadu, down south. Telangana, newest state. Not the newest state because उसके बाद भी उसका reorganization हुआ है, but Telangana split from Andhra. Then Tripura. Why is Tripura called Tripura? So Tripura is named after the goddess Tripura Sundari. Uttar Pradesh, one of the largest states of India. Uttarakhand. Chhattisgarh, Jharkhand and Uttarakhand were the 3 states which came up in the late 90s, early 2000s. So, sir, 29 states you mentioned? And West Bengal. नहीं मैंने JK ऐड भी नहीं किया. क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है?
क्रॉस योर लिस्ट एंड सी विच इज पेंडिंग. इसमें से क्या मिसिंग है? इसमें क्या मिसिंग है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश. रीड आउट योर लिस्ट ना. अगर आपको लग रहा है समथिंग मिसिंग है, रीड इट आउट लाउड. आई टेल यू इफ यू हैव पुट एनीथिंग. You are missing a state or you put an extra state? No, I'm getting total 28 states, but I'm not getting Uttarakhand. Then something you must have repeated. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, तेलंगाना, चंडीगढ़, Chandigarh is not a state. Punjab, Haryana. ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ यहाँ पे नहीं. अब आएंगे इनके कैपिटल्स एंड चीफ मिनिस्टर्स. यूटीज पे आएंगे बाद में. यूटीज पे आएंगे. हाँ, यूटीज देखने, यूटीज पे भी आ जाते हैं. नंबर वाला स्टार्ट है. महाराष्ट्र में भुवनेश्वर में 4, 5, 6, 7, 8 है. इनफैक्ट यूटीज भी चलो देख लेते हैं पहले. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीज के पहले कैपिटल्स कर दो. यूटीज ही नहीं आते कैपिटल तो कहां से आएंगे? सो हो गए कितने? कौन से? अंडमान निकोबार, दिल्ली, दमन दीव, लद्दाख, JNK, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़. Let's see. So Andaman Nicobar Islands, the capital is Port Blair. Then you have Chandigarh, capital Chandigarh, and Chandigarh is also the capital for Punjab and Haryana. Then you have Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. All of them together now have Daman as the capital. Earlier, Daman was separate. Daman Diu was separate. Dadra Nagar Haveli was separate. With Daman Diu having capital Daman and Dadra Nagar Haveli having capital Silvassa. But now all of them are combined into a single UT. Then Lakshadweep with capital Kavaratti. Then you have the National Capital Territory with capital New Delhi. Then Puducherry with capital Pondicherry or Puducherry. Then Jammu and Kashmir with the summer capital as Srinagar and winter capital as Jammu. The capital shifts. And finally, you have Ladakh with capital as Leh. And New Delhi is the only place with a chief minister. Baki union territories do not have chief ministers. What do they have? Who's the administrative head? जैसे city, lieutenant governor. Okay. अब जितने भी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स एंड चीफ मिनिस्टर्स तो लिखें. अब नए नए सिटीज. हाँ, आएगा वो वापस आएगा because now it's jumbled up. Let's bring it back. It's not worry. Let's see currently how many capitals of states we remember. और एक बता दूं, गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद नहीं है. गांधीनगर में की जगह अहमदाबाद है. I know it's a very रोकी को बुलाता हूँ अभी. मेरे को याद नहीं आ रहा है. बिल्कुल याद है. लखनऊ. किसका? अरे बाजू वाले के क्या पूछते, मेरे को पूछना. जब आपका नाम अभी बीच में सोनाक्षी सिन्हा की जब है तो बहुत बड़ा तो वो है. गोवा में कौन सी पंजी. जैसे मैं उसको पूछो ना कि पर्टिकुलर जगह कैसे पहुंचने का, तो कोई भी पार्ट पहले तो सीधा पंजी जाओ. तो सेंट्रली
पहले पल्ली जाओ फिर वहां से यहाँ मोड़ो, पल्ली जाओ फिर यहाँ से मोड़ो। Living in Goa is fun. Think again. तो अपने लॉन्ड्री में कपड़े देगी, फिर 2 हफ्ते के बाद फोन करेगी, हाँ मेरे कपड़ों का क्या हुआ, अच्छा आपने दिया था, हम चालू करने वाले हैं। उसके 2 हफ्ते बाद चालू इसकी मारना करेंगे, फिर उसके 2 हफ्ते बाद घर पे आएगा। It's good for a vacation, it's bad to live. There's a concept there called Susega, which means relax. सुबह 10 बजे मुश्किल से दुकान खुली होती है, 12 बजे शटर डाउन, 3 बजे खुलती है, 6 बजे शटर डाउन, रात के 3 बजे बियर मिलेगा, सुबह में 2 बजे दवाई सर इसलिए things you can remember even if you remember in the अब बिहार का कैपिटल कैसा भूल सकता है, झारखंड का कैपिटल नहीं भूल सकता। झारखंड धोनी, तो पता मुझे धोनी का Haryana's Punjab same kind of same job. my voice is fine. Most famous city of yeah, also. So उनको बाहर भी जाइए। yeah. Capital तमिलनाडु। चंडीगढ़ तो इंडिया का कैपिटल याद नहीं रखते। उदयपुर है, जयपुर है, अभी तो कैपिटल फैक्ट्री तो सीन बाकी है सबके, वो भी जोगी बना दिया। इससे ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, कंपनी कैपिटल कंपनी से लगा
कर्नाटक तो तेलंगाना तेलंगाना से हाँ तेलंगाना hopes of getting पॉइंट करके बात पहले रिपोर्ट के नाम में ठीक आता है उसके कैपिटल में भी की आता है इस ब्लॉक अगर Nice answer. कभी कभी ऐसे हम डैड जोक्स भी बनाते हैं सर सीएम जोक्स से आपने कौन सा बोला किसमें जेड आता है नहीं कौन से स्टेट में कौन से कैपिटल में जेड आता है कैपिटल में जेड आता है सिक्किम में क्या था कैपिटल में भी क्या आता है गुजरात का प्रधानमंत्री है राजस्थान में अभी हुआ था यूपी का नाम जी पॉलिटिक्स देखते हो तमिलनाडु का नाम जी है महाराष्ट्र का नाम कौन से कोहिमा हेरिबल चलो कैपिटल्स देख लें सीएम फिर देखेंगे सो आंध्र प्रदेश अमरावती बहुत छोटा है बट देख लो ओके गाइस although Amravati is the capital of Andhra, it actually has multiple capitals. So Amravati is considered as the legislative capital, but the executive capital is Visakhapatnam or Vizag, and Kurnool is the judicial capital. So places can have multiple capitals. So सिर्फ कैपिटल पूछे तो अमरावती है, बट अगर एग्जीक्यूटिव कैपिटल पूछे तो विशाखापट्टनम है, एंड जुडिशियल कैपिटल पूछे तो कर्नूल है. Kurnool, Kurnool, Kurnool या Kurnool, however you pronounce it. So Andhra Pradesh is Amravati. Arunachal Pradesh is Itanagar.
Yeah, this one I forgot. Itanagar. Then Assam is Dispur. Bihar is Patna. बिहार का कैपिटल तो याद होना चाहिए पटना. Patna was originally called in ancient times Patliputra. Then Chhattisgarh is Naya Raipur. Goa is Panjim or Panaji. Panji or Panaji. Gujarat is Gandhinagar, not Ahmedabad. Haryana is Chandigarh. Himachal Pradesh is Shimla. Jharkhand is Ranchi. Karnataka is Bengaluru. Bangalore is the old name. बेंगलुरु काफी सालों से हो चुका है. केरला इज त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम. स्पेलिंग सही लिखने वाले को फुल मार्क्स दे देने चाहिए एग्जाम में. मध्य प्रदेश इज भोपाल. महाराष्ट्र इज मुंबई. मणिपुर इज इम्फाल. मेघालय इज शिलोंग. मिजोरम इज एजोल, जेड से याद रहता है. नागालैंड इज कोहिमा. उड़ीसा इज भुवनेश्वर. पंजाब इज चंडीगढ़. राजस्थान इज जयपुर. सिक्किम गंगटोक के से याद रहता है. तमिलनाडु इज चेन्नई. तेलंगाना इज हैदराबाद. त्रिपुरा इज अगरतला टीटी. उत्तर प्रदेश लखनऊ. बदतमीजी से बिहेव करोगे तो योगी बाबा मारेंगे, तो तमीज इज लखनऊ. Whichever you remember, but remember that Lucknow is famous for tehzeeb, manners. Uttarakhand is Dehradun, and West Bengal is Kolkata. Calcutta is the old name. Kolkata is the new name. Okay, we have already seen the Union territories. So Andaman Nicobar, Port Blair, Chandigarh is Chandigarh, Dadra Nagar Haveli, Daman Diu is Daman, Lakshadweep is Kavaratti, NCT is New Delhi, Puducherry is Puducherry or Pondicherry, JNK Srinagar for summer and Jammu for winter, and Ladakh is Leh. Maharashtra is Mumbai, not Pune, bhai. Maharashtra is Mumbai. There's people confuse Ahmedabad, Gandhinagar. अब आएगा मजा, देखते हैं सीएम कितनों को कितने याद रहते हैं. चलो, कितना आपको लगता है आप कर पाओगे? 4. उसमें भी जोगी नहीं चलाऊंगा. आई नीड द एक्चुअल सरनेम. योगी आदित्यनाथ. डन विद दिस. अरविंद केजरीवाल. डन विद दिस. चलो, तो आंध्र प्रदेश भगवान क्यों जाने, इंडियंस जानेंगे. और ये तो इतनी न्यूज में रहते हैं क्योंकि आंध्रा में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चलता रहता है पंगा. 2 या 3 ही वहां पे लोग हैं जिनके बीच में कबड्डी चलती रहती है. सो सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश एनीबॉडी. दैट इज लाइक गुजरात में तो पटेल या शाह कोई होगा. सो आंध्र प्रदेश इज वाइस जगनमोहन रेड्डी. रेड्डी सरनेम इज एज कॉमन देयर एज पटेल और शाह इज इन गुजरात. वैसे अगर सर पंजाब में कोई सिंह है, चांसेस अच्छे हैं कि कोई ना कोई सिंह होगा वहां पे. नहीं, वो रिचेस्ट पीएम है. ये तो आते रहते हैं बिकॉज वाई जगनमोहन रेड्डी का तो कंट्रोवर्सी भी बहुत चलते रहता है. ओके, डन. अरुणाचल प्रदेश, एंड ही हैज बीन द सीएम फॉर एजेस. न्यूज में नहीं आते लेकिन ही हैज बीन देयर फॉर हदबा. So for Arunachal Pradesh, it is Pema Khandu, Shri Pema Khandu. Assam, I think last year or something आए हैं. He's been in politics for a long time, obviously. So Assam is Shri Hemant Biswa Sharma. अगला वाला किसी को तो पता होना चाहिए.
Bihar. Because he has been the opposition wanted him to be their prime ministerial candidate sometimes. Come on, they're one of the most famous or infamous states, but Bihar. Huh? Nitish Kumar, Shri Nitish Kumar. He's considered very efficient CM, but some people think he may have chances of being the prime minister, but kuch nahi pata. Okay. Chhattisgarh, recent change. ये तो चांस ही नहीं है. छत्तीसगढ़ is Shri Vishnu Dev Sai. Next one is famous or infamous. The only non-state to have a chief minister, Delhi NCT. श्री तो लगा लो आगे. तो इनके रिलेटेड करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आ सकता है. हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? If you don't know what is the connection between enforcement directorate and Arvind Kejriwal, then Hey Bhagwan. The enforcement directorate has sent summons 3 times to Arvind Kejriwal to appear before them, and every time he has given some excuse and refused to come. लिकर केस के स्कैम, लिकर लाइसेंस स्कैम में एक मिनिस्टर तो उनका ऑलरेडी अंदर है. 3 बार ईडी उनको नोटिस भेज चुका है. एंड एक बार वो किसी विपासना कैंप में गए थे, एक बार बोल रहे थे अभी इलेक्शन आ रहे उसके पॉलिटिक्स में मैं बिजी हूं. For 3 times he has refused to answer the summons of the ED. Big controversial news. So related, पूछ सकते ना, who is the current head of the enforcement directorate? नहीं. खुद को ही वो नोटिस भेजेगा क्या? खुद को ही नोटिस को मना. यार इंडियन पॉलिटिक्स इतनी भी गई हुई नहीं है. गोवा. क्यों भाई? फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई क्रिश्चियन नहीं है वहां पे. क्रिश्चियन क्यों होगा? अरे हाँ, जयकांत शिकरे नहीं है. दैट इज द विलन ऑफ अ मूवी. जयकांत शिकरे इज नॉट. जयकांत शिकरे मूवी का, वो सिंघम मूवी का विलन है. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा is Shri Pramod Sawant. Remember, Goa and Maharashtra are very closely connected. So you have Maharashtrian names. कोई कर, सावंत. These are typical Maharashtrian or Konkani surnames. जैसे मनोहर पारिकर थे पहले CM. You know Manohar Parrikar? He was the CM of Goa, then became the Defense Minister of India. He passed away a few years back. Very, very efficient person. Okay. Bhupendra Bhai Patel. Haryana. हरियाणा में कौन रहते हैं? एक्चुअली तो ठीक है, बट व्हाट आर दे? व्हिच टाइप ऑफ पीपल आर फेमस टू बी फ्रॉम हरियाणा? जाट गाल पे मारेगा तो क्या होगा? ऐसे उल्टी सीधी तरीके से याद रखने. किसको? तेरे घर पे? क्यों? तुम लोग हरियाणवी हो? अरे वाह. कोई एथलीट है फैमिली में? वो मेरी माँ भी दौड़ती. पागल है नहीं? सुबह सुबह अपने को मैं तो नींद में दूंगा. मेरी माँ भी दौड़ती है मैराथन. मैं साल भर में जितना नहीं दौड़ता उतना वो दिन का दौड़ती है. आई गॉट 11 मैराथन रनर्स इन माई फैमिली. हमारा पूरा कोटा तुम लोग दौड़ो, मैं मस्त होता हूँ. टू बैड. ओके, हिमाचल प्रदेश. सुखविंदर सिंह सुक्खू. श्री SSSS. श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू. अगर कोई किसी को बोलने में कोई लिस्प करता हो तो को बोलता हो तो आस्क हिम टू प्रोनाउंस दिस नेम. श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू. से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. वेरी बैड.
Okay. Jharkhand. Huh? How do you pronounce that? That is not Thala. It's Talai. Talai means head or chief. It's a Tamil word. Thala. The name comes because he was part of Chennai Super Kings, right? So that is Tala. Tala means head or chief. Thala. Thala क्या होता है? मैं मेरे लैंग्वेज तमिल के वर्ड्स के तुम लोग ऐसा कचड़ा करते हो. थाला नहीं होता है, तला ही होता है. जैसे इवन रजनीकांत इज कॉल्ड तलाइवा. उसको भी तुम बोलोगे थालावा थाला. Okay, Chief Minister of Jharkhand is Hemant Soren. I'm not sure, but I think he's the son of Shibu Soren, who was again a very famous personality for that area. I'm not sure, but because I know there was a Shibu Soren, but I don't know whether he's the father of Hemant Soren. Okay, कर्नाटका, ये भी बहुत न्यूज में होते हैं. जैसे एपी तेलंगाना वैसे ही कर्नाटका लिखा हुआ है. हाँ? कोई काम करनी है, कुछ चेंज होते रहते हैं. आपके लिस्ट के हिसाब से कौन है? हाँ, वेरी गुड, वही है, बच गए. श्री सिद्धारमैया इज द सीएम ऑफ कर्नाटका. सिद्धारमैया. Kerala, and he has been around for quite some time now. Yes, Pinarayi Vijayan, Shri Pinarayi Vijayan. वे शशि थरूर कौन से एंगल से? He is a major leader in the Congress. He is known for his English. इतना भी गुस्सा मत कर, इतना भी गुस्सा मत कर. नहीं, शशि थरूर का नाम सुन के उसको बहुत मजा आया होगा. Because Shashi Tharoor apparently has a huge fan following among females. Do you know who Shashi Tharoor is? Have you seen Shashi Tharoor? He's very good with his vocabulary. Accent, vocabulary, everything. Not bad looking either. That's it. Guys, opinion doesn't matter. Okay, Madhya Pradesh. After a very long time, this changed. क्या शशि थरूर को गूगल कर रही है? क्लास के बाद कर लेना. और तू क्यों झांक रहा है? तेरे को कोई काम की नहीं है. तू पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को गूगल कर. तो तेरी कौन सी शादी की उम्र है? ध्यान दे पढ़ाई पे पहले. ओके, सीएम ऑफ मध्य प्रदेश changed after a very long period of time. This is Mohan Yadav, Shri Mohan Yadav. Okay, अगला वाला is इसका तो सॉलिड कबड्डी हुई थी बीच में, महाराष्ट्र. बहुत लफड़ा हुआ था. उद्धव ठाकरे, फिर ये, फिर वो. Finally now it is Eknath Shinde, Shri. Again, typical Maharashtrian surname. Even Eknath, हाँ. Okay, Manipur. Manipur, I'm not sure because the name has been around for a long time. आपके हिसाब से कौन है? Yep, N. Biren Singh. N. Biren Singh has been there for a very long time now. A lot of these northeastern states में only a couple of them have changed. बाकी अपने को पता नहीं, but some of them have served for donkey's years now. Okay, Meghalaya. Again, long term. I don't think the name would have changed. Conrad Conkle. Yep, Conrad Conkle Sangma. Conrad Sangma.
Okay, done. Mizoram. I think this has changed. Zoram Thangma. नहीं. This is Pu Laldu Homa. Recent, I think BJP and Congress. I mean, जो कुछ six states में जो elections हुए थे, Mizoram was the only place where neither BJP nor Congress came. This was the local party something. The only place where neither BJP nor Congress won the recent round of elections. होता होगा because all of them seem to have PU in front of their name. Okay, I think this is the same for Nagaland. हाँ? नहीं फ्यूरियो. अबे खुद की हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रही है. इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह. और तू वहां उसके हैंडराइटिंग में क्यों झांक रहा है? तूने तो लिखा ही नहीं है. वाह. ओके, नागालैंड इज नहीं फ्यूरियो. Odisha. Oh, his father served as the CM for a very long time, and this gentleman has been serving as the CM for an immense long period of time. Odisha is almost synonymous with this person. One of the greatest administrators to have come. In fact, his party is now named after his father. Odisha. Anyone? Nope. Huh? It is Naveen Patnaik, son of Biju Patnaik. Shri Naveen Patnaik is the CM of Odisha and he has been there. जब से मेरे को याद है तब से यही है. या तो उनके पहले इनके पिताजी थे बिजू पटनायक, उसके बाद नवीन पटनायक. That's it. हाँ? Sure. You are thinking of a person called Devdutt Patnaik, who's a writer. और एपिक पे उनका आता था मिथोलॉजी देवदत्त पटनायक का. That is Devdutt Patnaik. So Naveen Patnaik, पंजाब. अरे वो कॉमेडियन है ना भगवंत सिंह मान. पहले कॉमेडियन रह चुके हैं या करंटली तो उनका स्टेटस बता रहा है. तो श्री भगवंत सिंह मान. But yeah, he was a stand-up comic. He literally was a stand-up comic. Bhagwan Singh Maan. Okay, this is the most recent change, I believe, Rajasthan. Literally, I think 1 or 2 months पहले ये हुआ है. पहले तो अशोक राम किस में बचता है? मंदिर क्या करते हुए बचता है? So राजस्थान है श्री भजनलाल शर्मा. Okay, सिक्किम. जाके वेफर्स लेके आओ. उससे भी बढ़िया ब्रांड लाओ. जाओ लेके आओ. सर सो जाओ वो बोलते गोले. सो जाओ. जैसे याद रखना हो. पीएस गोले. तमिलनाडु. बिल्कुल नहीं है. एम के स्टालिन. एम के स्टालिन. सी दो ही पार्टीज हैं साउथ में जो चलेगा, या तो डीएमके होगा या एआईडीएमके होगा. तो या तो इस पार्टी में से होंगे या उस पार्टी में से होंगे तमिलनाडु में. स्टालिन, लेनिन, कम्युनिज्म रशिया से ही आया है. स्टालिन इज लिटरली नेम्ड आफ्टर द रशियन लीडर स्टालिन.
बड़े कॉन्फिडेंटली फेंकती है। स्टालिन रशिया कहाँ से आ गया? स्टालिन रशिया से ही आया है। दिस पर्सन इज लिटरली नेम्ड आफ्टर द रशियन स्टालिन। There's a place in Russia called Stalingrad. Okay, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कॉमन सरनेम। So even Telangana is Revant Reddy. Shri A. Revant Reddy. પછી ત્રિપુરા. It's Dr. Manik Saha. Uttar Pradesh. That's Shri Yogi Adityanath. Then Uttarakhand. So Uttarakhand में भी, although we say the capital is Dehradun, it's only the winter capital. The summer capital is Gairsaing. So CM of Uttarakhand is Shri Pushkar Singh Dhami. Shri Pushkar Singh Dhami. Pushkar is a place, right? In Rajasthan. What is Pushkar in Rajasthan famous for? Which one? Which Mela? What is the prime feature of that Mela? The Pushkar Mela? Huh? No. But yes, I'm talking about an animal, but not horses. Cows. Rajasthan में होगा most camels. The Pushkar Mela is famous for camels, but Pushkar is also famous for one of the most rare temples. So Pushkar is famous for which rare temple? Pushkar is one of the only places supposedly which has a temple dedicated to Lord Brahma. There's no other temple of Lord Brahma apparently in India, major temple at least. Pushkar is the only place with a temple of Lord Brahma. Okay. Not Srimati. Not Srimati. Srimati is used only if you are married. She is not married. Shri is for males. So it is Kumari Mamta Banerjee. Also, what is she popularly known as? Didi. So Kumari Mamta Banerjee is the current CM of West Bengal. हाँ? CMs खत्म हुए ना, अभी तो और बड़े पर्सनालिटीज हैं. Chief Justice. Who's the current Chief Justice of India? We discussed it yesterday. कल था. तो बोलो. कल था. I don't remember, but फिर भी ठीक है. Anybody? Chandrachud is wrong. Which? Because there were two Chandrachuds. The father was also. So what is his name? So it's Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud. And very young for a Supreme Court Justice. So the current CJI is Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud. Okay. Current Chief of Defence Staff. And this position has only been created in past few years. I think General Bipin Rawat was the first one, but he died in an accident. So who's the current Chief of Defence Staff? Anyone? Nope. Okay. General Anil Chauhan. CDS, Chief of Defence Staff. Now, पूरे defense का आ गया तो which are the branches of defense? Army, Navy, Air Force. Name their chiefs. Army Chief. यार और कुछ नहीं तो कम से कम टाइटल ही बता दो.
What post could he be? Rank, rather, I should say. Which rank would be the chief of army staff? Field marshal. So there were field marshals, Sam Manekshaw and First field. Arjun Singh. Right. But no, there's no field marshal right now. Lieutenant. अबे लेफ्टिनेंट तो बहुत नीचे होते हैं. Lieutenants are very very low down. General. So General Manoj Pandey is currently the CA Army Staff. Okay, so if the chief of the army staff is a general, who's the chief of the air staff? Decent guess, but no. You are missing a term in between. Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. And the only one left is. So who's the chief of the naval staff? And what is the title? What is the rank? Admiral. Captain. Captain बहुत नीचे होते हैं. This is Admiral. Admiral R. Hari Kumar. Admiral R. Hari Kumar. Okay. Attorney General of India. Who's the current Attorney General of India? Attorney General is generally called the lawyer of the country. So who's the current Attorney General of India? सर मुश्किल से तो CJI याद रखते, चीफ जस्टिस जी का नाम याद नहीं रहता, अटॉर्नी जनरल तो कैसे याद रखेंगे? Is R. Venkatramani. Okay. And who's the current Solicitor General of India? These are all legal posts. So the current Solicitor General of India is Tushar Mehta. Very famous lawyer. Huh? तुषार मेहता का नाम सुना है? सुनना चाहिए. Okay, now this one तो पता होना चाहिए. Who's the current Speaker of the Lok Sabha? That's the Speaker of the Rajya Sabha. Over. De facto Speaker of the Rajya Sabha is, is who? Speaker of the Yeah. The current Speaker of the Lok Sabha is Shri Om Birla. You should hear him speak Hindi, हाँ? शुद्ध हिंदी में बात करते हैं. Okay. Moving out of India. Where are the headquarters of these places located? UN. UN is it was in Europe before. हाँ पहले यूरोप में था. UNCA was पहले यूरोप. अभी US में इसमें से एक का भी नाम अगर कोई बता दे तो मैं मान जाऊँ. बेल्जियम में बहुत सारों का है. जिनेवा में था. जिनेवा में था. आई थिंक ये अगर पूछने जाऊंगा तो ज्यादा तकलीफ मेरे को ही हो जाएगी. इसमें कोई होप है कि तुमको पता होगा? एक सेकंड. Okay. So Asian infrastructure is Beijing. हाँ see UN is in New York. I told you. BRICS Development Bank or New Development Bank is Shanghai in China. Asian Development Bank is Manila in Philippines.
IMF Washington, World Bank Washington, UNO New York, and UNICEF New York. I'm not going to not waste, but I'm not going to stop because सबसे पहले ये organizations क्या है वही पता होने चाहिए. So I'm going to jump to something easier. चलो एक काम करते हैं, विदाउट डिस्कशन राइट डाउन एंड देन देखते हैं कितने आए. आई थिंक देयर आर 50 कंपनीज, 45 और 50 कंपनीज. इसमें से कितना आपको बिना डिस्कस किए आएगा, राइट डाउन एंड सी. एक सेकेंड, फटाफट करते हैं. So we have 10 minutes. देखते हैं कितने आते हैं इसमें से. So Amazon.com, Apple, BMW, Dell, eBay, Facebook, Ford Motor Company, IBM, Intel, McDonald's. डिस्कशन किए बिना फिंगर ऑन लिप्स. हाँ क्या तू मुंह से लिखता है? आज पता चला मेरे को. एक ही हाथ है क्या तेरा? वाह. बेटा तू जहां पढ़ता है मैं लिटरली वहां का मास्टर हूं. देखते हैं इसमें से. आई एम आस्किंग द नेम ऑफ द फाउंडर. आई एम आस्किंग द नेम ऑफ द फाउंडर्स. One of my most favorite questions is who is the founder of Tesla? Elon Musk नहीं है. Nikolai Tesla never founded any company called Tesla. Nikolai I'm like amazed. टेस्ला नाम सुना है टेस्ला का? तो टेस्ला क्या है? टेस्ला नाम कहाँ से आया? तो जो मैं बोल रहा हूँ निकोला टेस्ला, उनके नाम पर से ही द टेस्ला कंपनी वाज नेम्ड. सो टेस्ला वाज अ साइंटिस्ट हु वाज अ कंटेम्पररी ऑफ एडिसन. एडिसन पता है? ना बोली वो. So Nikola and Tesla and Edison were contemporaries, and everybody said major inventions were actually made by Tesla, but Edison became famous. But credit was taken by Edison. Edison became famous. No, a lot of people don't remember Tesla, but Tesla actually. So your direct current and other things, a lot of these things were pioneered by Tesla. Okay, if you are done with the first 10, next. Microsoft, Nike, PepsiCo, Samsung, Sony, Starbucks, Coca-Cola, Walmart, Yahoo and Flipkart. इसमें से कितनों का आपको लगता है पता होगा? कौन से? पहले तो पता है, Microsoft and Nike. Okay. हाँ? लोगो कहाँ से आया वो बताया होगा किसी जमाने में. किसका? हाँ. He originally created as a tonic for hangovers and stomach ache and sold it to soda shops. Most of them, but Coca-Cola का story also starts like that. He used to sell the syrup. सब कुछ याद है, नाम याद नहीं है. 1800 late 1800s में थे. Coke was once given a chance to purchase a small another competitor, but they said no, बहुत छोटा नहीं खरीदेंगे. And that company was Pepsi. Coke once had a chance to purchase Pepsi. Coke did not take the chance, and now Coke and Pepsi, the two largest rivals. Okay. हाँ? क्या?
क्या क्या चीज? इंडिया में वी डोंट डिफरेंशिएट मच. यूएस में जाके जो कोक पीता है वो पेप्सी छुएगा भी नहीं, एंड वाइस वर्सा. टेस्ट वाइज दे आर डिफरेंट. अपने को समझ में नहीं आता, अपने को भी एक जैसा लगता है. सबसे अच्छा फिर थम्स अप में होता है. वो भी तो उसका ही है ना. इट वाज टेकन ओवर. हाँ, फ्लिपकार्ट के इंडियन फ्लिपकार्ट और इंडियंस. फ्लिपकार्ट का इंडियन वॉलमार्ट की सर्विस में वॉलमार्ट है. याहू का हॉटमेल का हॉटमेल का सभी भाटिया है. Okay, next 10. Snapdeal, Myntra, most of them are Indians. Snapdeal, Myntra, Jabong, AIB, Urban Ladder, Book My Show, Micromax, Yatra, Ola Cabs. तो आशीष For obvious reasons. बंद हो गया ना. ऑल इंडिया All India Buck. उससे आगे मत बुलवाना, उसके आगे मत बुलवाना. और रिटर्न में तो कभी भी नहीं. एविडेंस नहीं छोड़ना चाहिए पीछे. You are assuming that is the same thing which I am referring to here. Done. इसमें से एक भी आया. और ये तो सारे इंडियंस हैं. In the past like 10-15 years. अबे Vivo and Redmi are Chinese. Micromax is Indian. Okay. Quicker, Zomato, Hike Messenger, Alibaba, Twitter, YouTube, Google, Rovio, hashtag. But originally तो Twitter ही था. And Reliance Communications. Which one? हाँ, किसकी माँ? चलो 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 चलो. AIB YouTube वाला, I think so. हाँ, Hike Messenger. शायद, I'm not sure. हाँ, Quicker. नहीं पता प्रवीण. ऐसे तू एक बार आस्क कि क्या है तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता. I think it's an online. नहीं, Quicker is not an antivirus. Quicker मैं खुद भूल गया क्या है बे. It's an app for I think sales या कुछ का तो है. Quicker purchase and sales के लिए है शायद. 3 दोस्त हैं, उसमें से 2 लोगों को. Okay. इसमें से आया कुछ. And Airtel, Vodafone, Wikipedia and Pepperfry. $45 names. इसमें से कितने आते थे? 4-5. These are some of the biggest companies in the world, or at least in India, or at least in this particular area. Okay, so Amazon was Jeff Bezos. ये तो बीच में वो बड़ा रील आया था, उसकी वजह से सबको पता है. Apple was founded by Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne. Ronald Wayne was the third silent investor, and he sold up starting में था. And do you know he sold off his shares for how many rupees? How much money? बहुत कम हो. $800. 4 billion का होगा ना. 4 billion or something the value is. उसको लगा था नहीं चलेगी कंपनी, तो अपने शेयर्स दे दिए $800. Wozniak gave up a lot of his things so that the money could be given to the other employees. Wozniak never wanted money. I mean, Wozniak is still there, very much alive. Okay, BMW is Franz Josef Popp, but okay, and who's technically the inspiration and founder of Volkswagen? Huh?
Volkswagen में जर्मनी का ना कुछ हिटलर Hitler, Adolf Hitler. वो प्लेन Volkswagen cars. कार्स के नीचे उस पे पूरा ऐसे रोटेट कर दे तो नाजी का सिंबल ऐसा कुछ नहीं है. But Volkswagen was the people's car. So Hitler wanted some car which is cheap and accessible to people. So that's why that was the inspiration of the Volkswagen company. By the way, it is not the VOL. You write it as VOLKSWAGN, but it's not Volkswagen. It's Volkswagen. Okay. Dell was Michael Dell, named after himself. eBay was Pierre Morad Omidyar. Facebook, obviously, Mark Zuckerberg. The Ford Motor Company, Henry Ford. IBM is Thomas J. Watson. IBM International Business Machines is one of the largest companies for computers. Today, because of Apple, Microsoft, and others, लोग IBM को नहीं जानते. वरना the first largest computer company in the world was IBM, International Business Machines. Even today, a lot of tech में तो IBM is one of the biggest names. It's funny how people don't know IBM. Not is this generation doesn't know IBM. IBM was one of the largest companies for tech. क्या IBM के लैपटॉप्स अभी भी मिलते हैं. Okay, Intel processors जो बनाते हैं is Moore and Noyce, Moore, Noyce and Rock. And McDonald's were the McDonald brothers, Richard and Maurice McDonald. But the person who took over and made it famous was Ray Kroc. Okay, done छे. Microsoft was Bill Gates and Paul Allen. Bill Gates at one time the richest person on the earth. Nike was Bill Bowerman and Phil Knight. PepsiCo, Donald Kendall and Herman W. Lay. And it is after Lay that the chips Lay's is named. So Lay's is also owned by PepsiCo. Samsung was Lee Byung-chul. Sony was Masaru Ibuka and Akio Morita, Japanese. Starbucks was Jerry Baldwin, Gordon Bowker and Zev Siegel. Coca-Cola, the formula was made by John Pemberton. The company was established by Pemberton and Asa Candler. Walmart is the Walton family, so Sam Walton. Yahoo was Yang and Philo, Jerry Yang and David Philo. Flipkart Indian is the Bansal brothers, Sachin and Binny Bansal. Huh? Bansal is Lenskart. Snapdeal is Rohit Bansal and Kunal Bal. So the Bansal's surname is very common among a lot of startups in India. Myntra, Mukesh Bansal, Vineet Saxena and Ashutosh Lavania. Grofers is Albinder Dhindra and Saurabh Kumar. Jabong is Praveen Sinha, Arun Chandramohan and Lakshmi Poituri. AIB is Gursimran Khamba and Tanmay Bhatt. Urban Ladder is Ashish Goyal and Rajiv Srivats. Book My Show is Ashish Hemrajani, Rajesh Balpande and Parikshit Dhar. Micromax, the mobile, is Sumit Arora, Vikas Jain, Rahul Sharma and Rajesh Agarwal. Yatra.com, travel जो website है, is Sabina Chopra, Dhruv Shringi and Manish Amin. And Ola Cabs is Ankit Bhati and Bhavish Agarwal. And I see nobody writing this down. कोई बात नहीं. Quicker is Pranay Chulat. Zomato is Dipinder Goyal. Hike Messenger is Kavin Bharti Mittal. Alibaba is Jack Ma. Twitter, 4 people, Evan Williams, Noah Glass, Jack Dorsey and Bistone. Jack Dorsey was the CEO then. YouTube is Chad Hurley, Steve Chen and Javed Karim. Google is Larry Page and Sergey Brin. Do you know Rovio Entertainment? Rovio Entertainment, Temple Run and a lot of those game apps was created by Rovio Entertainment. So that is Kim Dykert, Yarno Vacuum and Nicholas Head, if I'm not mistaken, yes. The hashtag symbol, जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे हम यूज करते हैं, was that symbol का hashtag already existed, but its use as a hashtag was by Chris Messina. So what is the technical name for that symbol? Hashtag तो हम उसको बुलाते हैं for another purpose. What is the technical name for that symbol? Crisscross. नहीं. पुराने जमाने में some elder people would call it the pound symbol, but no. What is the technical symbol for the hashtag? Technical name for the hashtag? It's called the octathot. Then Reliance is Dhirubhai Ambani and later, of course, Mukesh Ambani.
Airtel is Sunil Bharti Mittal. Vodafone is Ernest Harrison and Jerry Wendt. Wikipedia is Jimmy Wales and Larry Sanger. And Pepperfry is Amrish Murthy and Ashish Shah. Sir, I guess. Danche, Yes. take a break. Gather again for beginning of the new session at 1:30. Ciao. Tata. Bye bye. See you. Maths आप ले रहे हो सर?